Hello everyone. Now today we are going in the third part of the video, that is another chemical properties of metals and non-metals. So today we are going to discuss about how a metal and a non-metal reacts with acids and bases, and similarly how a metal reacts with another metal solution. So firstly we will start with reaction with acids and bases. When we talk about reaction with acids and bases, firstly we are starting with how metal reacts with acids. As we know, acids are basically of two types. One is dilute acid and one is concentrated acid. So the first reaction considered with dilute acid, because in concentrated the reaction will take place on its own. So firstly we are starting with reaction with dilute acids. Whenever a metal reacts with dilute acid, it forms salt and releases hydrogen gas. And when hydrogen gas is released, we will hear a pop-up sound. Like a small cracker, a pop-up sound will come up. Metals like copper, silver, gold, mercury, they do not react with dilute acids. Sodium reacts vigorously with dilute acids. Iron and tin react slowly with dilute acids. So, here is the reaction with dilute acids. We are taking two acids. One is dilute hydrochloric acid and another is dilute sulfuric acid. Whenever a metal reacts with hydrochloric acid, it forms metal chloride salt and releases hydrogen gas. For example, sodium, a metal reacts with hydrochloric acid, forms sodium chloride and releases hydrogen gas. Similarly, magnesium reacts with hydrochloric acid, it forms magnesium chloride salt and releases hydrogen gas. Then aluminium reacts with hydrochloric acid, it forms aluminium chloride salt and releases hydrogen gas. So here sodium, magnesium and aluminium all reacts rapidly with dilute hydrochloric acid. When we talk about iron, iron also reacts with hydrochloric acid and forms iron chloride, or we can call it as ferrous chloride, but the reaction is occur very slowly. And now we are talking about reaction with dilute sulfuric acid. So when a metal react with dilute sulfuric acid, that is H2SO4, it will form metal sulfate and releases hydrogen gas. For example, magnesium, a metal, react with dilute sulfuric acid, that is H2SO4. It leads to formation of MgSO4, that is magnesium sulfate, and releases hydrogen gas. Similarly, zinc reacts with sulfuric acid, that is H2SO4. It leads to formation of zinc sulfate and releases hydrogen gas. So the thing common in the all reaction is that every time hydrogen gas releases out. So the conclusion is, whenever a metal reacts with dilute acid, it leads to formation of respective salts, whatever the metal is, and releases hydrogen gas. This hydrogen gas comes out with a pop-up sound, and whenever a burning matchstick, when we take the burning matchstick near the mouth of the test tube in which we are performing the experiment, then it will catch fire on its own. A burning matchstick, when comes near the mouth of the test tube, it will catch fire. The gas will catch fire. Which gas? That is hydrogen gas. So this is about how a metal reacts with dilute acids. Now we are going to talk about non-metals react with dilute acids. So basically non-metals are not capable of replacing hydrogen from their acids, and they are not able to form any kind of salt. For example, coal, a non-metal, when reacts with hydrochloric acid, no reaction takes place. Sulfur, a non-metal, when reacts with hydrochloric acid, no reaction takes place. So the conclusion is there is no evolution of gas. No pop-up sound is observed, no change in the color of the solution. When a burning matchstick comes near the mouth of the test tube, no fire will catch. So this proves that non-metals are not able to react with dilute acids. Now we are going to take the topic of reaction with bases or alkali solutions. Alkali solution basically means when a base is dissolved in water, then it is called as alkali solution.
So when a metal reacts with base, it leads to formation of a metal salt and releases similarly hydrogen gas. So when a metal reacts with a solution of base, or we can call it as a alkali solution like sodium hydroxide and potassium hydroxide solutions, metal will get dissolved in it and then it forms salt and also releases hydrogen gas. For example, here we are taking an example of aluminium metal. It reacts with sodium hydroxide solution dissolved in water. It leads to formation of sodium aluminate. This is a metal salt and releases hydrogen gas. The conclusion is that every time hydrogen gas is coming out, so it leads to pop-up sound, and when we put a burning matchstick near the mouth of the test tube, the fire will lit up. And now it's about non-metals. Non-metals are not able to react with bases. They are able to react with bases, but the reactions are a bit complex, so we are not able to understand at this level. This will be in your higher levels. So here we are talking only about reaction of metal with bases. Non-metal also reacts with bases, but the reactions are complex. Now the next topic is, from all these reactions, that is reaction with oxygen, reaction with water, reaction with metal acids, and reaction with bases. So from here we conclude that there is a reactivity series of metals. All metals do not react at the same rate. Some react faster, some react slowly, and some may do not react. So on that basis, metals are arranged in an order, and this is the order. By this we conclude that potassium is the most reactive metal. After this, sodium, then calcium, then magnesium, then aluminium, zinc, iron, lead, then hydrogen, then copper, mercury, silver, and gold. Silver and gold are considered as the least reactive metals. So now on this basis we are going to take in another topic that is very important, that what happens when a more reactive metal reacts with a less reactive metal. For example, we are talking about what happens when sodium reacts with iron. Does a reaction take place or not? So this can be explained, this can be understood by this concept. Whenever a more reactive metal displaces another less reactive metal from its solution, a chemical reaction takes place. It means, इसको हम इससे रिलेट कर सकते हैं दैट एक बहुत ही हाईली सुपीरियर पर्सन और एक हाईली इन्फीरियर पर्सन बोथ कम इन कंटैक्ट, हु विल बी एबल टू विन? द वन विच इज़ सुपीरियर. वो उसको क्या कर देगा, उस जगह से डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा, उसकी प्लेस से उसको रिमूव कर दिया. दैट्स वाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. The place of the metal is displaced by another metal. That's why it is called as displacement reaction. A more reactive metal is added to the salt solution of a less reactive metal. Then the more reactive metal displaces the less reactive metal. वर्ड्स में थोड़ा डिफ़िकल्ट है समझने के लिए, बट व्हेन वी टॉक अबाउट रिएक्शन दिस इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. बाय दिस वी आर गोइंग टू परफॉर्म एन एक्टिविटी. इन दिस वी विल टेक 10 ml of dilute copper sulfate solution in a test tube. We know that copper sulfate solution is blue color. We will put a iron nail in it and we stir it. उसको अच्छे से उसमें मिक्स करा देंगे and leave it for some time. थोड़ी देर के लिए उसे छोड़ देंगे. What we observe after some time, there will be the portion of iron nail which is inside the copper sulfate solution becomes reddish brown. जो आपका आयरन नेल थी वो कैसे कलर की हो जाएगी, रेडिश ब्राउन कलर की हो जाएगी. वाई? जस्ट बिकॉज अ लेयर ऑफ कॉपर गेट्स डिपॉजिटेड ओवर द आयरन नेल. जो आपकी कॉपर की एक लेयर है वो आयरन नेल के ऊपर डिपॉजिट हो गई है. सो उसका रिएक्शन देखिए कि आयरन जो है वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के साथ रिएक्ट कर रहा है. और इस केस में क्या हुआ कि सल्फेट के साथ कौन बाइंडेड था, कॉपर. बट नाउ यू ऑब्जर्व कि सल्फेट के पास कौन आ गया है, आयरन. वाई? जस्ट बिकॉज आयरन इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर. तो आयरन को उसने वहाँ से कॉपर को उसने वहाँ से हटा दिया और आयरन ने उसकी प्लेस को ग्रैब कर लिया, डिस्प्लेस कर दी पोजीशंस. पहले आयरन अकेला था, नाउ कॉपर इज़ अलोन, एंड वेयर कॉपर इज़ प्रेजेंट नाउ आयरन इज़ प्रेजेंट.
So this proves that iron is more reactive than copper. So blue color solution जो था हमारे copper sulfate का, now it gets converted into green color. Why? Just because now it will become the ferrous sulfate solution or iron sulfate solution. So formation किसकी हो गई है इसके अंदर? आयरन सल्फेट सोल्यूशन की. एंड वी कैन बाय दिस वी कंक्लूड दैट आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. एक एग्जाम्पल, अब इसका रेसिप्रोकल एग्जाम्पल ले लेते हैं. अब हमने क्या करा, फेरस सल्फेट सोल्यूशन लिया टेस्ट ट्यूब में और उसके अंदर कॉपर वायर डाल दी. कॉपर वायर डाली, उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया. व्हाट वी ऑब्जर्व, देयर इज़ नो चेंज इन द कलर. जो ग्रीन कलर का सोल्यूशन था वो ग्रीन कलर का ही रहा. देयर इज़ नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म. क्योंकि कलर चेंज नहीं हुआ तो इसका मतलब कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ. सो रिएक्शन देखते हैं कि कॉपर को हमने ऐड करा किसके अंदर, फेरस सल्फेट के अंदर. नो रिएक्शन विल टेक प्लेस, कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं हुआ. सो ये प्रूव करता है कि कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है आयरन से, वो उसकी प्लेस को हटा नहीं पाया. सो इसी के साथ हम और एग्जांपल्स देख लेते हैं कि हमने कॉपर सल्फेट लिया और जिंक लिया. सोल्यूशन किसका है, कॉपर सल्फेट का. उसके अंदर हमने जिंक मेटल को ऐड करा दिया. व्हाट वी ऑब्जर्व, देयर इज़ अ चेंज इन कलर बिकॉज कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर होता है और जिंक सल्फेट जो होता है वो कलरलेस सोल्यूशन होता है. तो ब्लू कलर का सोल्यूशन था, लेकिन थोड़ी देर बाद देयर विल बी नो कलर, ब्लू कलर उसमें से रिमूव हो गया. तो इसका मतलब कि केमिकल रिएक्शन हुई है, केमिकल चेंज हैज़ टेकन प्लेस. सो अब केमिकल चेंज हुआ तो इसका मतलब कॉपर और सल्फेट के बीच में जो बॉन्ड था वो ब्रेक हो गया और जिंक ने सल्फेट के साथ बॉन्ड बना लिया एंड इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ जिंक सल्फेट. अब कौन बाहर निकल गया, कॉपर. ठीक है, इससे ये प्रूव हुआ कि कॉपर इज़ मोर लेस रिएक्टिव देन जिंक. ज़्यादा रिएक्टिव कौन हुआ, जिंक, क्योंकि जिंक ने कॉपर को वहाँ से हटा दिया. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं. अब जिंक सल्फेट सोल्यूशन लिया जो कि कलरलेस है. मैंने उसमें कॉपर मेटल को डिप कर दिया, बहुत देर हो गई, रखा रहा, देयर इज़ नो चेंज, वो कलरलेस सोल्यूशन ही रहा. इससे ये पता चला कि कोई केमिकल चेंज नहीं हुआ रिएक्शन के अंदर. इट मीन्स कि जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू कॉपर, इसीलिए कॉपर उसको रिमूव नहीं कर पाया. सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं. कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, मैंने इसके अंदर मैग्नीशियम मेटल को डिप कर दिया. मैग्नीशियम मेटल जो है वो रिबन की फॉर्म में होता है, वो मैग्नीशियम रिबन मैंने इसके अंदर डाल दिया. कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन का कलर क्या होता है, ब्लू. मैग्नीशियम रिबन जब मैंने इसके अंदर डाल दिया, आफ्टर सम टाइम आई ऑब्जर्व कि अब दोबारा से सोल्यूशन कैसा हो गया, कलरलेस. और कॉपर जो है अब वो रेडिश ब्राउन कलर का ऑब्जर्व हो रहा है. इसका मतलब सोल्यूशन का कलर चेंज हुआ है, तो रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस. दिस प्रूव्स दैट कि मैग्नीशियम इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर. तो मैग्नीशियम ने कॉपर को वहाँ से हटा दिया और सल्फेट के साथ बॉन्ड बना लिया और क्या बन गया, मैग्नीशियम सल्फेट, और कॉपर मेटल अलग हो गया. फिर हमने मैग्नीशियम सल्फेट का सोल्यूशन लिया, उसके अंदर जिंक मेटल को डाला, देयर इज़ नो रिएक्शन. इससे ये प्रूव हो गया कि जिंक जो है वो लेस रिएक्टिव है देन मैग्नीशियम. एक और सोल्यूशन लिया, आयरन सल्फेट सोल्यूशन, ग्रीन कलर का सोल्यूशन होता है, उसके अंदर जिंक मेटल को डाला. अब जिंक सल्फेट सोल्यूशन का कलर कैसा होता है, कलरलेस. सोल्यूशन दोबारा से क्या हो गया, कलरलेस हो गया. दिस प्रूव्स दैट कि जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन आयरन. तो जिंक ने सल्फेट के साथ बॉन्ड बना लिया और आयरन को साइड प्रोडक्ट कर दिया. अब बाय ऑल दीज रिएक्शंस हमें क्या पता चला कि इन सब में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्या है, मैग्नीशियम, उससे कम रिएक्टिव जिंक, उससे कम रिएक्टिव आयरन, और सबसे लीस्ट रिएक्टिव इनके अंदर कौन सा है, कॉपर. तो अगर हम वापस से रिएक्टिविटी सीरीज़ पे जाएं तो हम यहाँ देख भी सकते हैं कि आप यहाँ देखोगे मैग्नीशियम यहाँ प्रेजेंट है ऊपर की तरफ, उसके बाद जिंक, जिंक के बाद यहाँ नीचे जाएंगे तो कॉपर आएगा. सो इससे ये प्रूव हो गया मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद जिंक, और जिंक के बाद आयरन, और आयरन के बाद लास्ट में कॉपर. तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव इन चारों में कौन था, मैग्नीशियम था. इसलिए मैग्नीशियम इन तीनों के सोल्यूशंस को रिड्यूस कर सकता था. जिंक को लेंगे तो वो मैग्नीशियम के सोल्यूशन को रिड्यूस नहीं कर सकता, लेकिन वो आयरन के सोल्यूशन को कर सकता है और कॉपर के सोल्यूशन को भी कर सकता है. आयरन को लेंगे तो वो जिंक के सोल्यूशन को नहीं कर सकता, ना ही मैग्नीशियम के सोल्यूशन को कर सकता है, बट वो कॉपर के सोल्यूशन को कर सकता है. और अगर मैं कॉपर को लूँ तो वो इन तीनों के सोल्यूशंस में कोई भी चेंज ऑब्जर्व नहीं कराएगा. यही तो हमने देखा है ना कि अगर हमने कॉपर डाला है
तो कभी भी कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है। और अगर हमने कॉपर के साथ मैग्नीशियम लिया तो मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव था, तो उसने उसके साथ कंपाउंड बना दिया। तो दिस प्रूव्स दैट मैग्नीशियम इज़ मोस्ट रिएक्टिव इन दीज केसेस देन जिंक, आयरन एंड कॉपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।